So today we will start with the GLBP practical. So let us revise whatever we have covered on GLBP. We know that in GLBP that I'll write only important things that we have to do. Okay, that it uses multicast address 224.0.0.102 and it uses virtual MAC address 0007.b400.xxxx. Basically, this will be our group number and this will be our forwarder number. Now we'll talk about what is forwarder number. Okay, and all. Suppose we have talked about active virtual gateway and active virtual forwarder. Okay, first, let me tell you again. So yesterday we have discussed about GLBP. Okay, this will be our multicast address and this will be our virtual IP. So here we will have 4x. Okay, this will be 0007 B400. We will have 4x. Okay, and basically in this x we will first two is for group number. Okay, the group number which we will give, and second one is forwarder number. Okay, we will talk about this forwarder number. Yesterday we have discussed about AVG and AVG, which is active virtual gateway, and AVF, which is active virtual forwarder. Okay, so active virtual gateway is responsible for giving response of the ARP. Okay, so first there is a election of for the first there will be the election. Suppose there are three routers. Okay, router 1, router 2 and router 3. So suppose there will be election for the AVG first. Okay, suppose for R1 this AVG becomes active. Okay, in AVG by default active by default preemption is disable. Okay, in AVG I'm talking about preemption is by default disable on the active router. Okay, and others will become listen. This one will become listen and this one will become standby according to the highest IP address. Okay, priority is same by default 100. Okay, so this is the role of active virtual gateway. Okay, so basically active virtual gateway is responsible for giving the reply of the ARP. Okay, it maintains one table. Okay, for the MAC addresses. Okay, we are going to talk about that in a while. Okay, after that we have concept of AVF. Okay, suppose this is R1, R2 and this is R3. Okay, so here for every forwarder we write like this. For AVF1, for active virtual forwarder 1, for this one this one will be active. Okay, and others will go into the listen. No one will go into the standby and all. Okay, this one will go into the listen, this one will go into the listen. Okay, and for active virtual forwarder 2, for AVF2 we will have R2 will be our forwarder 2. Okay, for this for active virtual forwarder 2 this will be active and others will go into the listen. Same will happen for the active virtual forwarder 3. Basically here this active virtual forwarder 1, forwarder 2, forwarder 3 is basically a concept, okay, in which we provide the virtual IP so that it can store on this our active virtual gateways table. There it will, from there it will give like if one PC has requested, it will give response of that R on the basis of this active virtual forwarders. Okay, so for active virtual forwarder 3, this router 3 will become active and others will go into the listen. Okay, so we can write this as like this. Okay, as we can see here, for active virtual forwarder R1 is forwarder, for active virtual forwarder 2 R2 is forwarder, for active virtual forwarder 3 R3 is forwarder. Okay, so we can write it like this for this R1, R2, R3. Okay, if we arrange everything that we have covered. Okay, this is our switch. Okay, these are our PCs.
Okay, for this is R1, this is R2, and this is R3. Okay, so first of all, this is our AVG. For AVG, R1 will be our active. Okay, and according to the IP address, this will become a listen and this will become standby. Okay, and for this is for forwarder 1, this R1 will become active. For forwarder 2, R2 will become active, and for forwarder 3, R1 will become active. Okay, they will become active for their own individual routers. For their own individual routers. Now what will happen here? Okay, this AVG will create one table. Okay, for forwarder 1, okay, it will give like this R1, and here it will provide virtual MAC address. What was the virtual MAC address? It was like 0007 B400 VFXXXX. I'm not writing this part. This part will be same. Okay, here we will write MAC address. Okay, and MAC address will be 0007 B400. Okay, after that in XXX, first it will write the group number, which is our 01. Okay, and the forwarder number, which is 1. Okay, so it will write 01, and same will be happen for the forwarder 2. It will write R2. Okay, here it will write what will be the group 01, and for the forwarder 2, and here we will write for forwarder 3 R3, it will be 01, and the forwarder, okay, it will be 03. Okay, same thing is happening here. Okay, now what we are gonna do? Okay, so let me tell you one thing also. Okay, suppose whenever this PC, suppose we have given, let us give the IP. Okay, we'll give this one IP as 192.168.1.1. For this we give 1.2. For this we give 1.3. Okay, for this default gateway we have given it like 192.168.1.100. Okay, we know that if a PC is trying to ping on the same network, it will go for the its destination network. If it's pinging to its on the different network, then it will go for its default gateway. Here we are pinging the same. Okay, default gateway, it will go into the same network. Okay, it will generate an ARP for this router. Okay, for 1.100. Okay, here we for 1.100, this R1 has IP. Okay, this R1 which is responsible for giving the reply of ARP. So how this R1 will give reply the ARP? We know that if it is sending 192.168.1.100, so it has to send the MAC address. So which MAC address will it send? So by default in GLBP, round robin algorithm runs. Okay, round robin load balancing algorithm runs. Okay, so first, for the first stop request, it will give the IP of, oh sorry, the MAC address of forwarder 1. So the data will go from here. For the second time, it will give the MAC address of forwarder 2. So the data will go from here, and same is applying for the forwarder 3. So the data is going from here. नाउ लेट्स इसको अप्लाई करके देख लेते हैं अब. ठीक है,
ओके वाइप कर लेते हैं। Now let us go to, this is our awesome, which is our PC. So first we will do no IP routing here. Okay, to make it the PC, now we will provide IP to this E0/0 interface. Okay, we will provide IP of 192 network, 192.168.101 dot. Let's give it 10. No shut. Okay, and we provided default gateway 101.100. Okay. Now what we are going to do, okay, we have this default gateway is for the virtual. Now we will configure, okay, yeah, and there is one more thing, that same concept as of HSRP, like within 10 seconds, if we haven't configured any on HSRP on any other routers, so the by default the router in which we have configured the HSRP, that will become the active router. So same concept is for the this AVG also. Okay, if we enable GLBP on one router and we waited for 10 seconds, then that router will announce itself as a active for AVF, sorry, AVG. Okay, so let us see if it will announce or not. Okay, first what we are going to do, we will assign the interface IP on the interface. After that, we will start the GLBP process. Okay, here let's enable the routing also. Network 0.0.0. Note of summary. Passive interface E0/1. Exit. Do right. Okay. So let us configure all the IPs first. Okay. After that, we will start the configuration of GLBP. Okay. So let us create one loopback here. Okay, and E0/0 interface. Okay, we give IP 192.168.1.2. Same for the E0/1, we will provide the IP 2.2. And same as for the E0/2 interface, we'll provide the IP 192.168.3.2, 55.55.5.0. Okay, now what we are going to do, we will enable routing here. Uh, 300 network.
0 exit. As we can see, it has made one neighborship with the 1.1. Why it hasn't made neighborship on the for the R3 and R4? Because we haven't configured that. Okay. Now let's go into the R3. Okay. For R3, let us check the interface. For interface easier/1, we will provide the IP 192.168.10.255.0. No shirt int E0/0 IP address 192.168.2.2.1 and set router GLBP 100 no sorry network 0.0.0 no to summary and passive interface E0/1. Okay, so this one is also configured. Till now we haven't configured GLBP. Okay, so do right. Now if you go to the R4, here we can see we have the interface numbers and E0/1. Here we will have IP1 3.1 255.55.0 no shirt exit router GIGRP 100 network 0.0.0 now to summary passive interface E0/1. So as we can see, it is making neighborship, so automatically it will ping 192.168.3.2. okay, it is pinging. Now what we will do, okay, we will enable GLBP on R2. Okay, so to enable GLBP, we will go to the interface of E0/1. Okay, here we will write GLBP, we will write group number here. Okay, then we will write IP. Okay, then we'll write IP name 192.168.101.100. So here let's wait for the 10 seconds. After 10 seconds it will announce itself as active. Okay, as we can see, it has announced itself as active. So to check, we have the command do show GLBP. Okay, yes. So to check, we have the GLBP command. Okay, so here we can see. Okay, one more thing. Okay, this is the information for the AVG, which is active virtual gateway. So state is active, which is telling us that active virtual gateway is active. Matlab, state of active virtual gateway is active. Okay, here we can see one state is changed. Okay, and here we can see the virtual IP address that we have given. Okay, its hello timer is 3 seconds and hold on timer is 10 seconds. Redirect time, forward timeout. Standby is unknown. Why standby is unknown? Because we haven't configured any other GLB, because we haven't configured GLBP on any other routers. By default priority is 100. Okay, waiting is concept for the load balancing. Okay, we will do practical on that also. Okay, and group members, you can see AABBCC, it is the IP 101 local forwarder. Okay, here we can see, look, for forwarder 1 we have this information. Okay, it starts from here. Okay, for forwarder 1 R2 is active. Okay, one state change, last change jo bhi hai. MAC address is this is the virtual MAC address. Okay, we have talked about 007 B400. 01 is for the group number. 01 is for the group number, and this and last 01 is for the
forwarder number. Okay, this is the owner ID, which is the by interface. I think this is the interface. Okay, active local. Let us check. To show interface E0/1. Okay, yes, this is the interface MAC address. Okay, this to show GLBP. So this MAC address is by default. No, not this one. This is owner ID is. This is the interface MAC address of E0/1. Now what we are gonna do, we will enable this GLBP on R3. Okay, let us see. We will enable it on the E0/1 interface. GLBP 1 IP 192.168.101.100, right? Okay, now here we can see forwarder 2 is active now. Okay, states is in listen. Okay, let us time. Okay, now it comes into the active, as we can see here. For forwarder 2 it is active. Okay, and for the forwarder 1, router 3 is in the listening state. Okay, and it is telling that our active router is 192.168.101.1. waiting is all concepts are same. Okay, and for the this AVG it is showing that I am in the standby mode. Okay, let us compare it with the R2. Okay, earlier it was showing only forwarder 1 information on the R2. Now it will show forwarder 2 information also. Okay, here we can see for forwarder 2 it is come to the listen state. Okay, owner ID, which is the this is the MAC address of this interface. R3 is E0/1 interface. Okay, so okay, yes, for this it is showing that active is 192.168.10.2, which is our R3's IP address. Okay, anything else? Okay, nothing else to be shown. Now we will enable this configuration on GLBP on R4 T0/1 GLBP 1 IP 192.168.101.100. Okay, let us wait for the 10 seconds. So the state has been changed to the active. Okay, let us write do show GLBP, do show GLBP. Okay, here we can see one more information has been added, that is of forwarder 3. Okay, now let us try to ping from R7. Okay, there we will see some changes. Quantity. Okay, do ping 1.1.1. Okay, it is pinging. So let us see the R table. Do show or okay. From here we can see it is going from 0101. Okay, 0101 is our R2. This one. Okay, it is going from the R2. Now let us clear this R table. To clear the command, what was the command to clear? So let us ping one more time. Do ping 1.1.1. Okay, now let us see do show hot. Okay, now we can see it is going from R2. Why it is going from R2? Let me show you. R4. Let us open R2. Do show GLBP.
Okay, state virtual active priority. Okay, here we can see load balancing by default is running as round robin. In round robin, we know that first it will first it will send from first it will send from R2. After that it will go from R3. After that it will go from the R4. Why it is going like this? Because of the robin round algorithm which is we are running. Now what we are going to do, we will delete this app cache, do clear. Okay, in a series wise. Okay, okay, suppose this is our R1, this is our R2, and this is our R3. Okay, if our PC, this is our PC, this is switch. Okay, this PC will generate one ARP. Okay, this switch will broadcast that ARP here. Okay, as this is our AVG, for this for AVG, this is our active. Okay, it is responsible for giving the R reply. In R reply, it will provide the MAC address. Okay, but how it will provide the MAC address? For this, it will use the load balancing algorithm called this robin method. Okay, round robin method. Okay, how this round robin method works? That for the first time when this will request. Okay, for the first time it will provide the MAC address of virtual MAC address. I'm talking about virtual MAC address of R1. After that, it will provide the virtual MAC address of R2. After that, it will provide the virtual MAC address of R3. ठीक है, आया समझ? सीरीज वाइज में जाएगा, पहले इसका देगा, फिर 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 इसका देगा. आया समझ क्वेश्चन? ठीक है, नॉर्मल है ना, कुछ वो नहीं है, सीरीज वाइज में जाएगा. ठीक है, यार ये लोड बैलेंसिंग चेक करने के लिए कमांड होती थी. So if you guys have to check for the load balancing, you have to just go to the do show GLBP detail. There you can find the command for the this what was it, load balancing. Okay, do show GLBP as let us see on all other routers. Okay, let's do show GLBP. So here also we can see the load balancing algorithm is round robin. Now let us go to the R3 GLBP. Okay, so here also we can see that it is using the algorithm of round. Okay, now what we are gonna do? Okay, we will change the algorithm. Now we are gonna use the weighted algorithm. So how we are gonna do that? Here is our R2. So this is our R2. Okay, we'll go to the int e0/1 interface. Okay, we'll write GLBP. After that we will always write group number. Okay, we will write load balancing. Okay, now we have three types of load balancing: weighted, host dependent, and round robin. Round robin is the algorithm which is running by default. Okay, now we will go to the weighted. Okay, and we will just put it. Okay, now if you will see do show GLBP detail. Okay, so here we can see load balancing weighted algorithm is running. Now we will see how this weighted algorithm works. For this we'll write go to the we will go GLBP अरे GLBP क्या है? GLBP हमारा ओपन स्टैंडर्ड भी है और सिस्को प्रोप्राइटरी, मतलब दोनों में काम कर सकता है. ओपन स्टैंडर्ड कह सकते हो आप इसको. ठीक है, तो जो
तो जो वेटेड एल्गोरिदम है बेसिकली वो जीएलपीपी के अंदर वर्क करती है। तो एल्गोरिदम ओपन स्टैंडर्ड और वो ऐसे मत बोलो, जो प्रोटोकॉल होगी वो या तो ओपन स्टैंडर्ड होगी या तो फिर वो होगी, क्या बोलते हैं इसको, सिस्को प्रोप्राइटरी। ठीक है, तो जीएलबीपी वो है हमारा, ओके ओके सॉरी, जीएलबीपी ओपन स्टैंडर्ड नहीं, जीएलबीपी सिस्को प्रोप्राइटरी है। ठीक है, तो जो हमारी जो ये भी सारी जो एल्गोरिथम्स होंगी, ठीक है, ये सारी हमारी किस में रन करेंगी। अच्छा, तो बाकी तुम्हारे इसमें क्या चलता है, चलो इसमें बात मत करते भी उस पे। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो वेट की एल्गोरिथम जो कमांड है फॉर दी टू चेंज द कमांड, यार मैंने इसकी कमांड लिखा ही नहीं ना, चलो कमांड लास्ट में लिखाते हैं। तो टू चेंज द कमांड वी विल राइट, सॉरी, टू चेंज द दिस weighted number. So for this we have the command glp1 weighting. Yes, for this we have a range from 1 to 254. Suppose we give it 40. Okay, for R2 and for R3 I will tell you how this is working. Okay, now I will go into the int e0/1. Okay, glbp1 weighting, let us give it 20. Okay, and to R4 I will give 10 and e0/1 क्या था यार कमांड, सॉरी, glbp1 waiting 10. now अरे अरे हाँ हाँ, बैलेंसिंग बता, अरे नहीं, खाली लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम डालना है। अभी देखो, डू शो जीएलबीपी क्या था, डिटेल था ना, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, राउंड रॉबिन चल रहा है ना एल्गोरिथम अभी, तो वेटिंग वाली कमांड अभी करेगा नहीं, अभी तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एल्गोरिथम चेंज करनी पड़ेगी। वो तो चेंज कर दी, सुनो सुनो, वो तो चेंज हो गया, पर जो मेन है ना वो यूज थोड़ा ना करेगा अभी, वो तो यूज तो अभी इसी को करेगा, अभी राउंड रॉबिन वाली एल्गोरिथम यूज करेगा ना। अब वो वेटिंग है क्या, वो जब हम वेटिंग को एक्टिव करेंगे ना, लोड बैलेंसिंग को, फिर हम बात करेंगे वो वेटिंग है क्या। ठीक है, पहले इसको एक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, तो GLBP 1 लोड बैलेंसिंग वेटेड। ठीक है, और किसमें चेंज करना था, R4 में, int e0/1 GLBP 1 load balancing weighted weighted. So how this weighted algorithm works, okay, let me tell you. So to one router we have given 40, to another router we have given 20 or 30, क्या दिया था, 20 दिया था शायद, and for another router we have given 10. Okay, so how this will algorithm will work na, it will work in the 4:2:1 ratio. Okay, for 4 times it will go from the R1, for the for from R2 it will go for the 2 times. Okay, and for R3 it will go from for the 1 time. Okay, let me show you. Let us go to the R7. Okay, यह सब में एल्गोरिथम वो कर दिया ना, एक बार चेक कर लेते हैं, exit to show GLBP. Okay, here we can see, okay, weighted is running. Okay, waiting is 10, the R4. Okay, okay. So now what we are going to do, we'll ping to let us clear the cache first, to clear cache. Okay, now we will ping 1.1.1.
Okay, do show up. So here we can see it has gone from the 10/2. Now we will clear, do clear up. Again we will ping, do ping 1.1.1. Do show up. Okay, it is going from 1. Now let us clear again, do clear up, do ping 1.1, do show up 10.2. ठीक है, this 02 is for forward 2. Okay, let us clear up once again. Let us ping again, let us see again, do show up. It is going from, for 2 times it has gone from the 2 router 2. Let us clear it again, do clear up, do ping 1.1, do show up. One time it has gone from the 03. Let us clear it again, to clear up. हाँ हाँ, उसको कर रहे हैं अपने आईएसपी को. डू शो आप. यार अभी क्या करे, क्लियर करे ना, तो एक बार पिंग करते दोबारा. आप डू क्लियर आप, नहीं डू शो आप. दिखा के do ping 1.1, do show up. Okay, again it is pinging from 101. Okay, clear करो, clear करते हैं. Let us clear it, do clear up. Again we will do ping. Okay, let us see the up. Again it is, so 4 times it has done from the 101. For the 2 times it has done from the R2, and for the 1 time it has done from the R4. अभी उधर आते हैं, टोपोलॉजी में दोबारा दिखा देते हैं एक बार और. उसी की तो डिपेंडेंसी है, तभी तो 4 बार इससे गया और 2 बार उससे और 1 बार उससे. हाँ, रेशियो रेशियो है, रेशियो काइंड ऑफ रेशियो. ठीक है, इस हिसाब से वर्क करेगा. नहीं, चेंज करेंगे फिर चेंज करेगा यार. फिर वो कैलकुलेशन कैसे करोगे उस हिसाब से, मैं कैलकुलेशन कैसे बताऊंगा. सिस्टम तो कर देगा, मैं कैसे बताऊंगा कैलकुलेशन. 41% का मैं कैसे बताऊंगा तुम्हें कितनी बार भेज रहा है. 4:1 का रेशियो तो मैं आपको बता सकता हूँ. हाँ बस ऐसे. ठीक है, 4:2:1 के रेशियो. अभी देखो यहाँ पे देखा आपने, मैंने जो अभी क्लियर कर. हाँ ठीक है. हाँ, अपनी एल्गोरिथम में कुछ ऐसे रन करता है कि अगर 40% या फिर 20 फिर 10% ऐसे भेजेगा 4 बार. फिर मतलब एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि याद रखो आप, अगर आप ऐसे इस वेटेड में ऐसे सेट करते हो, जिसको ज्यादा परसेंटेज हो गए उससे ट्रैफिक ज्यादा फ्लो होगा. ऐसा नहीं लगातार उससे होगा. अभी देखो ऐसा नहीं हुआ था ना. फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, R1 से हुआ था, उसके बाद एक बार R2. हाँ हाँ हाँ, ऐसे बोलो आप. ठीक है, अब देखो मैं आपको, अभी मैं टोपोलॉजी मांगा ना, फिर थोड़ा सा समझाता हूँ. एक बार मैं एक चीज और देख रहा हूँ. अभी क्लियर करें क्या करा था, पूछो आप. ठीक है, अब देखो वापस हुई. ठीक है, तो जब 4 बार R1 से आ गया, उसके बाद ये वापस R2 में आ गया. ठीक है, सेकंड से भेज रहा. अब मैं आपको दिखाता हूँ. हाँ, नहीं मैक एड्रेस. अरे तो अभी तो हम, ऑब्वियसली होगा ही अभी तो. अरे हम तो अभी एक एक बार करके पिंग कर रहे हैं ना.
हाँ, अरे आर्प का रिस्पॉन्स तो यहीं से आएगा ना। स्विच को मैक एड्रेस मिल कहां से रहा है? अरे आप बताओ। अरे इसने 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 आर्प जनरेट करी, ये रिप्लाई करेगा ना जो एवीजी है। मैंने आपको बताया ना, एवीजी के पास एक टेबल बनाएगा वो एवीएफ की, एवीएफ 1 एवीएफ 2 करके, ठीक है। नहीं, जब आर्प जनरेट होगी, आर्प कब जनरेट होती है? जब इसके पास मैक एड्रेस नहीं होता ना। अरे सुनो ना, अरे कौशल मेरे भाई, हम आर्प उड़ा रहे हैं ना बार बार, सॉरी आर्प कैसे उड़ा रहे हैं ना, इसलिए तो बार बार अलग से भेज रहे हैं। अरे तो अभी मैं आपको लोड बैलेंसिंग दिखाऊंगा कैसे फिर, बहुत सारे पीसीस लगा दूं। हाँ, हाँ। वो एल्गोरिदम वेटेड वाली एल्गोरिदम। हाँ, हो गई उसके हिसाब से तो वो। स्विच का मैक एड्रेस चेंज हो रहा है। अरे देखो यार, रुको रुको, देखो, सपोज ये हमारा, चलो ये राउटर 1 छोड़ो, ये दो हमारे राउटर है, ठीक है, ये हमारा स्विच है, ठीक है, ये हमारे 3 पीसी है, ठीक है। अरे अरे नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे फिर एक से, दिक्कत क्या हो रही है ना, देखो देखो देखो, बात सुनो। ये हमारा राउटर 1 है, ये हमारा राउटर 2 है, ठीक है। हमने सपोज इसमें करी 50% हमारा ये है, 50% हमारा ये है, 50% डेटा हमारा यहाँ से जाना चाहिए, 50% यहाँ से जाना चाहिए, ठीक है। अब जो ये राउटर 1, ये सॉरी जो ये पीसी 1 है, इसने भेजा, स्टार्टिंग में इसके पास अपनी मैक टेबल में डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। आप, ठीक है, आप भेजेगा, ये हमारा सपोज ये हमारा एवीजी है एक्टिव, इसके पास एक टेबल होगी जिसमें R1 और R2 की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, जो भी फॉरवर्डर वगैरह है, ठीक है। इसके पास ये मैक होगा, ठीक है। अब ये जब भेजेगा इसको, ठीक है, इसके पास तो कुछ नहीं है अभी, तो यहाँ पे तुम्हारा डेस्टिनेशन में क्या होगा? जब आर भेजेगा, ब्रॉडकास्ट होगा, ब्रॉडकास्ट होगा, तो यहाँ पे स्विच अभी लर्न नहीं करेगा, ये क्या करेगा, इसको इधर भी ब्रॉडकास्ट कर देगा, इधर भी कर देगा, इधर भी कर देगा, इधर भी कर देगा, करेगा, ठीक है। फिर जो R1 है, ये एल्गोरिथम के थ्रू, अगर राउंड रॉबिन है तो पहले इसको दे देगा, फिर इसको देगा, जो भी आर आती रहेगी उसके हिसाब से, ठीक है। और अगर वेटेड वाला है, अगर 50% इसका है तो पहले इसको दे देगा, ठीक है, वो सब ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपने आप को दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैक एड्रेस इसने लर्न करा, रिस्पॉन्स करा, ठीक है, स्विच के पास भी आ गया, ठीक है, स्विच ने लर्न कर लिया। यार आर्प में वो लर्न करता है कि उसमें वापस लर्न करता है वो? सोर्स मैक एड्रेस से लर्न कर, हाँ, ठीक है। तो ये वापस जब ये यहाँ से इसको भेजेगा ना, फिर जब इनके बीच में कम्युनिकेशन होगा तब स्विच लर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद अब जब भी ये पीसी, ठीक है, इसको भेजते रहेगा, समझ रहे हो, डेटा यहां से भेजेगा तो ये स्विच ब्रॉडकास्ट करेगा। अब नहीं करेगा ना, अब इसी इंटरफेस से भेजेगा ना, बात समझना, ठीक है। अब एक बार इसके लिए आप जनरेट हो गई,
जब तक दोबारा जनरेट नहीं होगी तब तक ये स्विच के पास रहेगा। एक तो ये स्विच के पास भी रहेगा, इसके पास भी अपनी कैम टेबल होगी ना, उसमें भी स्टोर करके रखेगा। जब उड़ जाएगी तब ये भी ले मांग लेगा, ठीक है। अब सेम फॉर दिस पीसी2, इस पीसी2 के पास भी ऐसी होगा। जब पहली बार इसके लिए जनरेट होगी, ये इसके पास जाएगा, ये क्या करेगा, R2, यार ये जंपिच हो गया क्या यहाँ पे, समझ रहे हो तुम इतना सा? अरे भैंस की उड़ी है पूरा। हाँ ये बैक से आ जाता है, कहाँ गया? अरे इसकी रबड़ का, तुम्हें एल्गोरिदम तो समझ में आ गया ना, तुम्हें दिक्कत वो स्विच के उससे है ना। अभी वो बताता हूँ, ठीक है, रुको रुको। थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ क्या पूछ रहे थे तुम? अब देखो ये पीसी2 है, स्विच टू, हाँ हाँ। अब देखो, रुको रुको, पहले मेरे को एक्सप्लेन करने दो फिर अब बात करते हैं, ठीक है। अब ये पीसी2 है, ये आप जनरेट करेगा। देखो पीसी1 के पास हो गई है, अब पीसी2 जब तक कम्युनिकेट करता रहेगा तो स्विच में कोई चेंजेस आएंगे, कैम टेबल में चेंजेस आएंगे फॉर पीसी1। जब तक पीसी1 चेंज करता रहेगा, अरे पीसी1 चेंज करता रहेगा क्या बोल रहे हो? हाँ, तब तक नहीं करेगा, ठीक है। सुनो, देखो एक शायद दिक्कत मेरे को लग रहा है तुम्हें यहाँ पे आ रही है, तुम्हें लग रहा है वो पैकेट के हिसाब से लोड बैलेंसिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है तुम्हें? नहीं, आर्क के हिसाब से, ठीक है। आए, अच्छा तुम्हें ये लग रहा था पैकेट के हिसाब से? अरे नहीं, अरे मैं आर्क कैसे उड़ा क्यों रहा था, ठीक है। हाँ हाँ, अरे उस वाले इंटरफेस पे होगा ना। अब देखो, ये देखो, अब ये एल्गोरिदम किसकी देगा, ये अब देगा R2 का। अगर सपोज रॉबिन राउंड भी है या कोई भी है, तो अब सेकंड टाइम किसका नंबर आएगा, इसका नंबर आएगा R2 का। अब ये क्या कहेगा, R2 का मैक एड्रेस आर्क का रिप्लाई देगा, R2 के मैक एड्रेस से, वर्चुअल मैक एड्रेस की बात कर रहा हूं मैं, वर्चुअल मैक एड्रेस से रिप्लाई देगा। वर्चुअल मैक एड्रेस जिसमें ग्रुप नंबर और हमारा एक्टिव फॉरवर्डर होता है, जो भी फॉरवर्डर है, फॉरवर्डर इसका क्या होगा, 02 होगा। अब उसने उससे रिप्लाई दिया, इनके बीच में जब एक बार कम्युनिकेशन हुआ, तो स्विच क्या करेगा, सेंडिंग वाले उस वाले में, उस वाले इस वाले वर्चुअल मैक का वो लर्न कर लेगा, ठीक है। फिर वो कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक ये कैम टेबल रिमूव नहीं होगी, या जब तक ये आप टेबल अपनी उड़ाएगा नहीं। आप टेबल की टाइमिंग क्या होती है? अरे किसको, अरे 300 सेकंड बाद नहीं भेजता क्या दोबारा? 300 सेकंड बाद आप कैसे, कितनी देर बाद रिमूव होता है, 8 घंटे होते हैं, कितना होता है? आपकी टाइमिंग क्या होती है? अरे वो तो इसका हो गया, आज का कितना होता है, 8 घंटे तक स्टोर, 4 घंटे स्टोर करके रखता है ना वो। अरे सुनो ना, देखो यार, हमारे नेटवर्क में क्या 3 ही पीसी होते हैं, और सुनो बहुत सारे होंगे ना, तो समझ लो 100 पीसी जा रहे हैं R1 से, 100 पीसी जा रहे हैं R2 से, 100 पीसी जा रहे हैं R3 से। डिपेंड कैसे जा रहे हैं, आर्फ के हिसाब से। मतलब जो पहली आर्फ रिक्वेस्ट आई, उसके लिए उसने R1 असाइन कर दिया, जो दूसरी आर्फ रिक्वेस्ट आई उसके लिए उसने R2 असाइन कर दिया, समझ रहे हो? यार इसका आर्फ का टाइमर क्या होता है, 4 घंटे होता है मेरे हिसाब से। R1 नहीं, पीसी। हाँ, पीसी1 जब तक दोबारा जनरेट नहीं करेगा तब तक नहीं होगा, ठीक है। जो भी एल्गोरिथम, जो भी एल्गोरिदम हमारी रन करिए वो किस बेस, ईवीजी नहीं, एवीजी, ठीक है।
ठीक है, और एक और एल्गोरिदम है जिसका नाम क्या था, होस्ट डिपेंडेंट था ना। तो उसमें देखो क्या है, उसमें जो आर्प कैशे आ गई, एक बार अगर इसको मिल गया, सपोज ये वाला पीसी है, इसने इसको भेज दिया, तो फिर हमेशा इसी से भेजेगा। एंट्री स्टोर हो गई अब, ठीक है। उसका ये तरीका है, वो कोई यूज नहीं करता। लोग बेसिकली सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो वेटेड करते हैं, रॉबिन राउंड से भी ज्यादा। कि वेटेड में देखो मेनली बेसिकली वेटेड, सुनो एक मिनट, बेसिकली वेटेड हम क्यों यूज करते हैं, सपोज ये हमारा प्राइमरी लिंक है, ठीक है, ये हमारा सपोज 100 Mbps का, ये हमारा 40 Mbps का, ये हमारा 10 Mbps का। तो फिर हम क्या चाहेंगे, हमारा मैक्सिमम डेटा कहाँ से ट्रेवल करे, अरे 100 MB से ना, ठीक है। पर हम ये तो नहीं चाहेंगे ना कि यार हमने पैसे तो इसके भी दिए, कंपनी पैसे इनके भी देंगी ना बैकअप लिंक हो गए, है ना। तो हम तो ये भी चाहेंगे थोड़ा बहुत डेटा यहाँ से भी फ्लो। पर वो कैसे डिसाइड होगा, ऐसे ही डिसाइड होगा, वेटेड से। तभी जो वेटेड होती है ना, वो ज्यादातर उसमें चलती है, ठीक है। लिंक यूटिलाइजेशन को हाँ करेगी, तभी तो लोड बैलेंसिंग कर रही होगी ना उस हिसाब से। यार इनके अंदर कुछ कुछ ना कुछ फीचर तो होता ही होगा जिसके हिसाब से ये सब कैलकुलेशन करेगा। एल्गोरिदम मतलब क्या है, उसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन हो रही होगी, इसके बेसिस पे वो सारी चीजें कैलकुलेट कर रहा होगा, है ना। ये कैसे, ये डिसाइड कैसे करेगा 50% टाइम इसको जाना है, जैसे हमने करा। देखो हाँ एक चीज और, देखो अभी आपने एक चीज नोटिस करी थी, जब मैं आप कैसे उड़ा रहा था, तो आपने देखा कैसे जा रहा था वो, पहली बार इससे गया, ठीक है, फिर इससे गया, फिर इससे गया, फिर इससे गया था, नहीं 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 ऐसे नहीं, पहली बार इससे गया था आप, फॉर द फर्स्ट टाइम इट वेंट फ्रॉम द R2, आफ्टर दैट two times it went from the R3, after that it go from the R1, then again 3 times it went from the R2, ठीक है। ऐसा देखा था ना तुमने कि ऐसा हुआ था। तो मतलब ये फिक्स नहीं है, बस ये परसेंटेज वाइज है कि वो खुद ही कैलकुलेट करेगा अपने हिसाब से कि कैसे जाना है। जैसे रॉबिन राउंड में क्या है, पहले तो यही जाएगा, फिर यही जाएगा, फिर यही जाएगा, फिक्स है, ठीक है। पर जो वेटेड वाला है उसमें वो परसेंटेज के हिसाब से डिसाइड करेगा कि इतनी बार इसको यहां से भेजना है, इतनी बार इसको यहां से, इतनी बार इसको यहां से, ठीक है। हम्म? हाँ तो बता दो दिया, होस्ट डिपेंडेंट वाली वो कैसे वर्क करती है, उसकी कमांड बता देता हूँ। अरे बताया ना, ये देखो सपोज ये R1 है, ये जनरेट हुआ, ठीक है। इसके पास एक बार इसकी स्टोर हो गई ना, क्या बोलते हैं, मतलब एक बार इसने आपका रिस्पॉन्स यहाँ से इसको दे दिया, तो फिर हमेशा यही भेजेगा, ठीक है। ये कभी चेंज नहीं करेगा, हमेशा यही भेजेगा, यही R1 फिर हमेशा एक्टिव रहेगा, ठीक है। हाँ, समझो कि आप जैसे HSRP में यूज होता है ना, जब तक एक्टिव है तो उसी से सब कुछ लो हो रहा है, ठीक है। समझो बस वैसा ही है, और ये यूज नहीं करता। तुम GLBP, हम GLBP यूज क्यों कर रहे हैं, अरे हाँ लोड बैलेंसिंग के लिए ना, बेसिक तुम रुको, तुम मेरे से पूछ रहे थे ना कि HSRP में लोड बैलेंसिंग, मैंने तुम्हें बोला था वो बहुत बेसिक लोड बैलेंसिंग है, वो कोई लोड बैलेंसिंग नहीं है।